हमारे बीच में बैठे हैं तो थोड़ी बैलेंस की बात करनी पड़ेगी, पर ये ना लगे कि इसके पक्ष में है जो उसके पक्ष में है। लेकिन मुझे समय क्योंकि अब जो बचा है, अपने श्यामनारायण जी ने संकेत भी किया है, परोक्ष भी और प्रत्यक्ष भी, तो मैं दोनों संकेत समझ रहा हूँ। देखिए, दो तीन बातें हैं भाई। यदि हम चर्चा उन्हीं शब्दों से करेंगे जो शब्द अंग्रेजों ने दिए हुए, तो शायद मामला सुलझेगा नहीं। जनरली माना जाता है कि नादिर शाह और ये क्या नाम है दुरानियों के हमलों के कारण पंजाब के लिए सप्त सिंधु के लिए, ताकि उसमें ये सारा इलाका है एक शब्द कॉमन शब्द जो जम्मू कश्मीर हिमाचल और पाकिस्तान और ये सारे के लिए सप्त सिंधु है। इसमें मुगलों की और अफगानों की जो मुगलों की कह लीजिए जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, और उसके डिसइंटीग्रेशन होने से जो नए पावर ऑफ सेंटर पर रहे थे उसमें कुछ तो इंडियन ही थे, जो 12 मिसलें जिनकी चर्चा विद्वानों ने की है, जो तो इंडियन ही थे सारे, और कुछ ऐसे लोगों के पास भी पावर ऑफ सेंटर आए जो मजहब से इस्लाम को मानने वाले थे लेकिन विदेशी थे, यानी मुगल थे पहले वो सेंट्रल सत्ता के अंडर थे, अब वो आज़ाद हो गए, कुछ तुर्क थे। इस प्रकार से यानी जो पूरे का पूरा क्षेत्र है डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब इस पूरे क्षेत्र को विदेशी सत्ता जो लगभग खत्म हो गई थी, उसका प्रभाव खत्म हो गया था, अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करना था। मैं ये इंटीग्रेट शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि कई मित्र जो इतिहास के हैं, जब मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि भाई अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट जहाँ बनाई उसका क्या लाभ हानि, तो लगभग एक बात पर सभी सहमत होते हैं कि साहब बाकी जो छोड़िए जो नुकसान हुआ, पूरा हिंदुस्तान एक कर दिया। पहले छोटे छोटे राजा थे, लड़ते फिरते रहते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, तो बाकी हम उनको 50 गालियाँ निकालें, लेकिन एक बात तो उनकी पीठ होनी पड़ेगी कि सारे हिंदुस्तान को जियोग्राफिकली एक बना दिया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कर दी, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जब ये मुगल सत्ता सप्त सिंधु में डिसइंटीग्रेट होने लगी, तो 3 फोर्सेज जो मुझे लगते हैं जो बड़ी फोर्सेज हो गई, एक तो रणजीत सिंह तो थे ही, उनका नाम तो चर्चे से आई भाई, दूसरे गुलाब सिंह थे, और तीसरे हमारे कांगड़ा के महाराजा संसार चंद थे। संसार चंद को भी शौक था कि छोटे छोटे राजा इस दौड़ में पिछड़ गए, और प्रैक्टिकली अब उसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है। रणजीत सिंह को कामयाबी मिली, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो पंजाब के एरिया में छोटी छोटी मिसलें हो गई थी, अब उन्होंने मिसलों को जीता। सिंह का बहुत विजन था, उनको लगता था कि विदेशी सत्ता सब सिंधु क्षेत्र से समाप्त हो गई है, अब मुझे इस सारे क्षेत्र को इंटीग्रेट करना है, फिर ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है। अब भाई किताबें हिस्ट्री की लिखी मिलती हैं वो अंग्रेजों की लिखी हुई मिलती हैं। अभी हम जितनी कोट करते हैं ज़्यादा, अब मुझे के नाम भी याद नहीं रहते, कोई लंबे लंबे नाम होते हैं, अब तो ट्रांस वाले भी नाम बीच में आ रहे हैं, उनका नाम लिखावा भी खतरनाक है। तो अब हम किताबें जब उन्हीं की कोट करते हैं, तो जब उनकी किताबें कोट करेंगे तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो भी कोट करते हैं कि वो तो बड़ा अत्याचारी था, रणजीत सिंह तो धूर्त था, ऐसा था। उन्होंने 50 विशेषण रणजीत सिंह के बारे में लगाए हुए हैं, और तिरकर को लेकर भी थोड़ी छीटाकशी की हुई है। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे फिर आप कहेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह का बड़ा दूरदृष्टि थी, उन्होंने विदेशी सत्ता के डिसइंटीग्रेट होने पर उन्होंने सोचा कि और कोई सत्ता ना आ जाए, और कोई सत्ता तो अंग्रेज तो आई रहे। देखिए, जो इनके तुर्कों मुगलों के हमले हुए अरबों के, वो तो हुए इस साइड से, अफगानिस्तान साइड से, लेकिन जो अंग्रेज या यूरोपीय सत्ता है वो थोड़ी दूसरी ओर पानी से आई, तो वो वहां से आगे बढ़ते आ रहे थे। इधर रणजीत सिंह ने मौका लेकर भाई इस एरिया को इंटीग्रेट करने का कोशिश किया। मैं समझता हूँ इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्टेप था। अब उसके साथी कौन बने? उसका साथी बना गुलाब सिंह। अब गुलाब सिंह की इंटरप्रिटेशन दो प्रकार से कर सकते, भाई उसके सेनापति थे, उसकी सेना में नौकरी करते थे, फलाना थे। अब उन दिनों राजा और सेनापति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था। देखिए, ऐसा राजा कोई नहीं होता था जो लड़ाई में खुद न लड़े। बहुत सी लड़ाइयाँ तो राजा को आगे बढ़कर लड़नी पड़ती थी, तो इसलिए सेनापति थे, बहादुर थे, और गुलाब सिंह तो केवल बहादुर थे, राजा नहीं थे। रणजीत सिंह बहादुर भी थे, ये सब दोनों रणजीत सिंह में भी थे, गुलाब सिंह में भी थे। इसलिए जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में ये हिस्ट्री का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा संयोग है कि दोनों इकट्ठे हुए।
जैसे संसार चंद तो पिछड़ गए बेचारे, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे कैसे हो, सब हिस्ट्री है भाई, उसको दोहराने की जरूरत नहीं कि जहाँ से भाग कर गए अफगानिस्तान भी जाना चाहते थे, मैटर ऑफ चांस रास्ते में किसी और मिस्र में रणजीत सिंह के किसी सेनापति के पास लगे, फिर लाहौर में आए, अब उन्होंने उसको नौकरी पर रखा। लेकिन कारण जो मर्जी हुआ, गुलाब सिंह अपनी योग्यता से लगभग रणजीत सिंह के समकक्ष रहे। अब रणजीत सिंह को इस प्रकार के जो देवर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए उन्होंने जम्मू के पूरे इलाके में, जम्मू की बात महत्वपूर्ण था। अभी हरवाटी ने बताया कि 22 रियासतें थी, हमारे कांगड़ा में भी वैसे 22 की रियासतें कहा जाता है कांगड़ा को लेकर। तो ये 22 रियासतें थी, तो इनको इंटीग्रेट करना, इनको इकट्ठा करना, ताकि ये पूरा सब सिंध को इंटीग्रेट करने का सपना साकार हो, उसमें गुलाब सिंह बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसमें बड़ा संवेदनशील मामला डीडो का था। अब मैं छेड़ना नहीं चाहता था कि जम्मू में बैठकर डीडो के बारे में बात करनी थोड़ा पैशन हाई हो जाते इस तरह कि गुलाब सिंह के बारे में लिखा हुआ ना कि उन्होंने डीडो की बड़े कैसे हत्या कर दी, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ऐसा आता ही है। देखिए ये तो फिर यदि आप भाई इस दृष्टि देखेंगे, फिर तो रणजीत सिंह की जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर रहा था यही कर रहा था, देशी राजाओं को धीरे धीरे इकट्ठा करके एक बड़ा राज्य खड़ा करना चाहिए था जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। और डीडो भी उस दृष्टि से, क्योंकि रेबिलियन थे वो, लेकिन मैं शुरू में भाई हो सकता मेरी राय से सभी सहमत ना, तो मुझे लगा मैंने हरवाटी का भाई केरा देखकर थोड़ा समझा जाए हो सकती है, इसलिए मैंने खुद ही शुरू में क्लियर कर दिया। ये सारा इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस चला उसमें गुलाब सिंह बड़ी महत्वपूर्ण था, और गुलाब सिंह को रणजीत सिंह इसीलिए राजा बनाया। लेकिन बाकियों को, रणजीत सिंह के भाई बहुत बहादुर लोग और भी थे, लेकिन बाकी किसी को राजा ने बनाया। वो तो पेशावर में भी किसी को बना सकते थे, मुल्तान में भी बना सकते थे, लेकिन जो उनको लगा कि ये मेरे बराबर का आदमी है, हम दोनों मिलकर जब चलेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उन्होंने उसको जम्मू का राजा बनाया। और जम्मू का राजा बनने के बाद गुलाब सिंह ने जो किया, देखिए ये हमारा जो अभी पंडिता जी सेंट्रल एशिया की बात कर रहे थे, हमारा तो भाई सारा जो लड़ाई झगड़े होते थे सेंट्रल एशिया से होते थे, उधर से लोग आते थे हमला करने के लिए, तो वो सारा बॉर्डर सिक्योर किया जाए, ये काम गुलाब सिंह ने किया। तो पूरे का पूरा जाने सब सिंधु क्षेत्र को इंटीग्रेट करने का और सिक्योर करने का सेंट्रल एशिया से, ये गुलाब सिंह और रणजीत सिंह ने दोनों ने मिलकर काम किया। और मैं समझता हूँ ये जो कहना कि कौन इसमें से ऊंचा था कौन बड़ा था, ये प्रैक्टिकली अंग्रेजों के ट्रैप में फंसने वाली बात होगी। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के सहायक थे और दोनों ने सक्सेसफुली सब सिंधु क्षेत्र को यूनाइट करके एक बहुत ताकत खड़ी कर दी थी, और इतनी बड़ी ताकत कि अंग्रेजों की हिम्मत सतलुज को क्रॉस करने की थी। अंग्रेजों की इच्छा बहुत थी कि ये क्षेत्र हमारे कब्जे में आए, लेकिन उनको जैसे अभी हरवाटी ने शायद कहा कि रणजीत सिंह को लगता था कि अभी इनसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, और अंग्रेजों को भी लगता था कि जब तक ये भलामानस जीता है तब तक झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को एक तरफ से उनको उनसे डर था, उनको उनसे डर था, लेकिन अंग्रेज जीतना तो चाहते थे। अब भाई अंग्रेजों की, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद जो सिनेरियो हुआ, मैं उसमें किसी के व्यक्तिगत गुण अपने क्या थे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से रणजीत सिंह किसी उचित उत्तराधिकारी का अपने जीते ही निर्माण नहीं कर पाया। देखिए अच्छा बादशाह होता है, वो मरने से पहले ही किसी न किसी को त्याग करता है, लेकिन रणजीत सिंह किसी को त्याग नहीं कर पाया। खड़ग सिंह बने, दूसरे फिर तो बने ना बने क्या होगा, एक प्रकार से इतना भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया कि एक दिन राजा बनता था, दूसरे दिन उसका कत्ल होता था। तो उस लड़ाई झगड़े में गुलाब सिंह का परिवार भी लगभग सारा, उसके भाई, उसके बेटे, भांजे, सब उसमें स्वाहा हो गए। अब भाई उसकी स्थिति में भी इवन देन देखिए, जब पहली लड़ाई हुई, ये पंजाब की जो अंग्रेजों से पहली लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसमें भी गुलाब सिंह की यदि हिस्सेदारी होती भी न मान लेते, वो उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो रणजीत सिंह ने क्या कहा था, जब रणजीत सिंह को किसी ने कहा कि भाई आगे बढ़ो, उसने कहा एक बार तो उड़ा देंगे लेकिन दोबारा हमें उड़ा देंगे। तो गुलाब सिंह भी दूरदृष्टि के मालिक थे, वो जानते थे कि अभी इनसे जुड़ने का वक्त शायद नहीं आया है, वक्त आने पर भिड़ा भी जा सकता है, और भिड़ा तब भी जा सकता था यदि लाहौर दरबार इकट्ठा होता। शाह मोहम्मद ने जंगनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रानी जिंदा, जिसका जिक्र हरवाटी ने किया, वो तो टुंडे लाल को चिट्ठियां भेज रही थी कि आदमी भेजो, इस
खालसा फौज को सबक सिखाओ ताकि इनका दिमाग सही हो, और ये मुझे जो तंग करते रहते वो ठीक हो। रानी जिंदा तो भाई मालिक थी, रानी जिंदा का बेटा तो राजा था। शाह मोहम्मद से न्यूट्रल किस्सा तो किसी का नहीं लिखा हुआ, शाह मोहम्मद ही लिखता है कि रानी जिंदा अंग्रेजों से मिली हुई थी। और गुलाब सिंह के बारे में शाह मोहम्मद ने कहीं लिखा नहीं कि अंग्रेजों से मिला हुआ था। गुलाब सिंह ने जो आचरण किया वो स्ट्रेटेजिकली उस वक्त ठीक आचरण था। और मैं समझता हूँ जिस वक्त सारे का सारा पंजाब अंग्रेजों के पास जा सकता था, क्योंकि वो जीत ही गए थे, मोदी की लड़ाई वो जीत ही गए थे। लेकिन ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती कहिए कि उस वक्त अंग्रेजों की गवर्नमेंट नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ भाई, वो तो जैसे हनुमान जी ने शायद कहा कि व्यापारी कंपनी थी, बिजनेस करती थी, उसको शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देने पड़ते थे कि भाई इस साल जो वो किताबें बनी हैं, कैश बुक और लेजर बुक बनी है, उसमें इतना प्रॉफिट हुआ है, शेयर होल्डर को दिया भी जाता था। और केवल शेयर होल्डर को ही नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट भी मिले हैं कि वहाँ के एमपीज को रिश्वत भी नहीं पड़ती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट को रिश्वत भी देती थी। वो किस लिए कि दूसरी कंपनियां तो उनको लाइसेंस ना मिले, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी मेंबर पार्लियामेंट को रिश्वत भी देती थी। वो सारा पैसा कहाँ से आता था? इसलिए जब भी लड़ाई कोई होती थी वो फिर हिसाब किताब ध्यान रखते थे कितना खर्चा आया। तो उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया खर्चा आया, तो भाई पहले तो 1 करोड़ तो दे ही लो, पक्ष में नहीं हो, क्योंकि इस पर खर्चा बहुत आएगा। और अब रेवेन्यू जीरो है और गाड़ी में और कुछ बदल गई, वही हालत होगी कि 4 पैसे बचते हैं और 50 रुपये खर्च होते हैं। और जिन लोगों से हमारा सामना होगा वो हमारा जान पहचान के लिए रेस से जला के हैं, और हमारा पावर ऑफ सेंटर दूर है, लड़ाई के बहुत होंगे और हमें नुकसान होगा। इसलिए इसको मैं अपने कब्जे में करने के इंटरेस्ट में नहीं। तो भाई क्या किया जाए उसका? 1 करोड़ भी छोड़ नहीं सकते और वो कब्जा भी करना नहीं चाहते। फिर गुलाब देखिए, गुलाब सिंह भी आकर रणजीत सिंह के चेला था, वो स्ट्रेटजी जानता था। उसने कहा आप मुझे 75 लाख मुझे दे दीजिए। प्रैक्टिकली अंग्रेज ग्राहक की तलाश कर रहे थे और गुलाब सिंह को उस इलाके की जरूरत थी। गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए देकर, जिसको हम कहते हैं खरीदना, वो खरीदना नहीं था प्रैक्टिकली, वो तो अंग्रेजों ने 1 लाख का जो हरजाना मांगा हुआ तो वो हरजाना देने बड़ी बात थी। लेकिन असली बात भाई उसके लेने के बाद गुलाब सिंह ने सारा जिनका आज तो विधानसभा लेकर भी किया, वो सारे इलाके जीत कर हमारी जो सेंट्रल एशिया से सीमा लगती है उसको सुरक्षित किया। ये गुलाब सिंह नहीं कर सकते बहुत बड़ी। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं बदकिस्मती इसलिए करता हूँ भाई, गुलाब सिंह पर केवल 3 ऑथेंटिक किताबें मिलती हैं। सबसे पहली गुलाबनामा। गुलाबनामा 1876 में छपा था, फारसी में लिखा हुआ है। कृपा नाम की मौत के 2-4 महीने बाद छपा था और 1876 में छपा था। वो भी सुखदेव सिंह तड़क ने, वो फारसी जानते थे, उन्होंने छपा। और आज 2022 तक उसका ना हिंदी अनुवाद छपा है ना पंजाबी अनुवाद छपा है। जिस पंजाब में हम नैरेटिव चेंज करने की बात करते हैं, उस पंजाब में गुलाब सिंह की ऑथेंटिक जो हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता। अब भाई उमेश राय जी से मेरी प्रार्थना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को ये अपना दायित्व निभाना चाहिए। गुलाबनामा का पंजाबी ट्रांसलेशन जरूर छापे, हिंदी वाला तो छपता रहेगा, क्योंकि उसकी ज़्यादा जरूरत पंजाब में है, जम्मू वालों को इतनी जरूरत नहीं, वो सब गुलाब सिंह के गुलाबी करते हैं। तो इसलिए पंजाब में उसका ट्रांसलेशन छापे, मतलब छापे यूनिवर्सिटी पंजाब में बांटा जाए। दूसरी किताब जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो KM पणिक्कर की गुलाबनामा, गुलाब सिंह की बायोग्राफी है, छोटी सी है, 100-150 पेज की है। अब भाई उसका तो मेरे ख्याल में अब आउट ऑफ प्रिंट ही है, पुराना रीप्रिंट कहीं लाइब्रेरी में पड़ा होगा और देख लेना भाई कहीं ठीक में ना खा लिया हो, तो उसको भी छाप दिया। उसमें गुलाब सिंह का पॉजिटिव चित्रण किया गया है। और तीसरी किताब जो आई है इतने सालों बाद, वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में बाबा सुंदर सिंह हैं, उन्होंने जम्मू फॉक्स के नाम से महाराजा गुलाब सिंह पर लिखा है। लिखा जिस दृष्टि से, लेकिन ऑथेंटिक 3 किताबें हैं। तो भाई गुलाब सिंह जी को दुनिया छोड़े इतने साल हो गए, 200 साल तो राज तिलक को हो गए, और जम्मू के लोगों की प्रशंसा भी मैं बहुत सुनता रहता हूँ और अच्छी बात है। किताबें 3 हैं, बाबा सुरेंद्र सिंह जम्मू में नहीं है, पणिक्कर भी जम्मू में नहीं है, तो तीसरी कृपा राम की किताब है, उसका जो जम्मू बड़ा स्पेशल किया 1976 में अंग्रेजी ट्रांसलेशन छपा है,
मुझे लगता है ये जो सेमिनार हुआ है, इस सेमिनार के बाद कम से कम 2 किताबों का, मणिपुर वाली किताब का और ये क्या नाम है इसका, गुलाब नामा का, इसका पंजाबी में ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। यदि ये हो जाता है तो संकल्प भी दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ हमारा ये चर्चा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। गुलाब सिंह को लेकर बात किया जाएगा। Iran, Mesopotamia or Iraq, and Central Asia, and India was already here called. That was what I say, what I mean to say that Napoleonic wars had impact. And then there was the revolution of 1848 in Europe. This revolution started from Sicily and on to Italy, and then to Germany, France, Germany, and Austria. This movement was anti-monarchical movement. Although the revolutionaries tried to topple some of the monarchies that existed first. The monarchies were too powerful and well coordinated with a strong army. They could not succeed. Nevertheless, it had an impact. For instance, in England, it brought about the Corn Law. You may remember the Corn Law. It has much to do with the farmers and agriculture of Great Britain. And then also there was American Civil War. You all know that the Americans in the Civil War wanted to cast away, throw away the yoke of British imperialism. And finally, the decline of Ottoman Empire near our home. The decline of Ottoman Empire had great impact on India also. And I will remind you about the Khilafat movement, which took Indian National Congress at one point of time, and even Gandhi started a strong pro-Khilafat movement, which is again a moot point, and historians have begun to contradict the wisdom of following the Khilafat movement. But the most important development of the 19th century was what we call the Great Game of Central Asia, which has very direct impact on what was happening in India. The Great Game of Central Asia, which is generally attributed to Lord Curzon, had begun much early, as early as 1830. Because in 1830, Lord Ellenborough, the Viceroy of India, was approached by strong forces, powerful forces, to establish a land route to Bukhara and open a new trade route to Bukhara. That was the beginning of the Great Game of Central Asia. The British realized that the trade with Central Asian region was as important as the security of the British Empire in the Asian region.
And lastly, the rise of Bolshevik movement in Russia towards the end of 19th century. It was a game changer, the Bolshevik revolution, which actually culminated in 1824 when Stalin divided Central Asia into 7 states according to their language and culture and so forth and so on. In the context of Central Asian game, the British colonial power took it very seriously, and they found that northern part of Kashmir, which had been conquered by the great warriors, the Dogra warriors of Maharaja Gulaab, and the Gilgit, Honda, Nagar, and all those areas, they were contiguous to what we call the underbelly of the Soviet Union, or in today we call it Tajikistan. Now, they knew that if the communists, the Leninists, Marxist-Leninists moved downwards, captured Kashmir or the adjacent area, crossed the Wakhan, finally arriving at the Indian Ocean, all waters of the Indian Ocean. So here, the British government played a great game. One of the principles of colonialists, especially the British colonial power, was fighting their wars through proxies. Pakistan is fighting their war in Kashmir through proxy. And America is fighting its wars in Asia through Pakistan proxy. Fighting through proxies was one of the principles of the British colonial power, among other principles. This was not the only principle, among other principles, like divide and rule. So, it should not be taken that easy that the British or the Sikh kingdom sold Kashmir to Gulaab against 75 lakh rupees. It's not that simple. It's not at all that simple. It's part of the big game. The British knew, and the British have succeeded because they planned much ahead. Nothing can be achieved unless you plan, and they have great patience to execute their plan. But long ahead of the sale of Kashmir to Maharaja Gulaab, that British wanted a proxy. And because he was a great general in the Sikh army and established his position as not only as a warrior, but also as an administrator and one who understood the psychology of the British. So therefore, selection of Maharaja Ranjit Singh, many more people could pay 75 lakh. That was not a big amount, but it was the person, Maharaja Gulaab. And the British wanted to establish their sway not only through Kashmir, but by dismembering the Ottoman Empire, by controlling the Persian Gulf, by
establishing links with the Khanate of Bukhara, which was the most prominent Khanate at the time. So all these factors were being taken into consideration to establish the state of Kashmir. And deliberately, the northern areas, that means north of the river Singh, were left undemarcated. And if you recollect the terms of the Treaty of Amritsar, Maharaja Gulaab Singh was given the permission to conquer northern area, Ladakh, because then after its conquest, the exact name of the state was Riyasat Jammu or Kashmir or Ladakh with Tibet Ha. Tibet Ha means the Tibet, it's a plural. So this whole area was not defined, but left open. It was the British wanted him and encouraged him and even supported him to conquer the vast, difficult terrain of northern areas. I'll make a small digression here. I have always very sad thought over one happened. In 1947, the partition हो गया, कश्मीर आज़ाद बन गया। तो क्या हुआ कि दिल्ली वालों ने कलेक्टर पर उठाकर वो रियासत जम्मू और कश्मीर, जिसको बनाने में डोगरे सूरमाओं का खून बहा है हिमालय की पहाड़ों दर्रों में, आज भी वो ब्लड वहाँ पर है। उस कश्मीर को उठाकर एक ऑटोक्रेट दिल्ली क्रिमिनल आदमी को सपोर्ट कर दिया, संभालो ये प्रॉपर्टी ऐश करो। No nationalist leader who had ever read the history of conquest of Kashmir and northern areas with Maharaja Gulaab Singh would ever have given Kashmir like that and thrown away on a platter. No rules, no conditions. They removed a benign ruler. They installed a willing autocrat. And the consequences, you are really well acquainted with. I need not elaborate that. This question has haunted me for long. If that had not happened, if the sanctity of the Dogra kingdom, which ruled for 100 years, had been maintained, and the wire media had been Hari Singh was promised that he would be given a fair dealing, but only at proper time. But that proper time was never given to him. Within 1 month of signing an agreement, he was banished from Kashmir. In 1935, the British pressurized Maharaja Singh to give them to carve out the Gilbert agency from the Gilbert Gulaab. Actually, the pressure had begun right from the times of Maharaja Gulaab. But they were trying to let the Dogra ruling house establish its foothold in Kashmir. Because as I said in the beginning, that they worked through proxies. They wanted the proxy to have a foothold. And when that foothold
was there. They started. Here, intrusion in Kashmir. In 1924, the delimitation committee of the Soviet Union, of which Stalin was the head, it succeeded in dividing Central Asia into 5+2 states, 5 Central Asian states and 2 Trans-Caspian states. But the 5 Central Asian states were very important, and out of these, Uzbekistan was much more important. The British were alerted that the Soviets had come right after Bangladesh, Tajikistan, which borders with Afghanistan. It's perhaps the most crucial region. Beyond that lies the Wakhan Arc, which belongs to Afghanistan. But with Tajikistan and Afghanistan is a long border. And there, the British thought that now the Russian agents, the Soviet agents, could penetrate into Wakhan and then into Kashmir. Even when they tried to depose Maharaja Pratap Singh, one of the reasons was that some agents, this is what the British said, some agents, some Russian agents, some Soviet agents, communist agents were captured in Jammu. There's no proof about that. But this is how the proxies, they make the proxies work. And with that, the British established direct control in Gilgit and the northern areas. The freedom movement that started in Kashmir, first at the Muslim conference in 1925, and later on as National Conference under Sheikh Mohammed. The so-called freedom movement, I have generally thought that it was anti-Dogra movement. The ANC movement did not start from the streets, no, it started from the mosques. And the reason why it gained so much popularity was that it was pitted against Dogra. Dogra came in force. Therefore, the historians, commentators, and political opinion makers tried to denigrate the Dogra group as far as they could. Bringing all the adverse and negative things against Dogra. We were students. My generation, after me, the next generation, our earlier generation, all the generation were fed with the false propaganda that there was a tyrannical rule, there was tyrannical administration, tyrannical, and so much so. What rationale was there for the quit Kashmir movement? Dogras were not foreigners. They had contributed in the making of the formation of the state. And then, in structuring the state, in bringing the law, the penal code, the penal code is even today accepted as the rightful legal code. When all these positive things were done, nobody talked about these positive things. They were left into oblivion. They were forgotten. And only a dark
and very negative picture of Dogra rule was projected. We all support a democratic dispensation, there is no doubt, but I am reminded of a verse of Iqbal, which I will translate into Urdu. It's in Persian, but I will, it's very meaningful. Create us as a Jamhuri, Gulaab He says, run away from democracy and be the slave of one experienced person. I am not against democracy, but I am telling you tonight, गुरेज़ तक जमहूरी गुलामे को तकारी एक तकार का गुलाम बनो कि 200 गधों से एक आदमी की सोच नहीं हो सकती है. So this is how in a country where people are illiterate, backward, uncivilized, this is how they treat democracy. Happening even today. It's mobocracy, it's not democracy. Shaykhullah made best use of mobocracy. Construction and building of a state. And a state whose geographical layout, which was already already the Hindu kingdoms like Maharaja and others had Sanskritized. They had Sanskritized in the whole entire Himalayan. अभी कहा अष्टोजी ने कहा इशारा किया, कई लोगों ने इशारा किया. But this all development is all working by the good program whose foundation was the foundation of it was J.P. Maharaja. This all had to be taken into consideration when the future of Kashmir was to be decided. It was not done. It was not done because they never cared to read the history of Yoga Empire. Never tried to read the history of Kashmir even before that. 480 years of the rule of Sultan gave Kashmir nothing but feudal system, entrenched feudal system, and dissensions, internal fighting. But after that, for the first time, the state was created, administrative structure. Maybe in the beginning, it was just the beginning. बनाया फॉर्मेशन बनाया, इसकी कोई कदर नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं. और उसके बाद last 75 years of our independence, the entire contribution of the Dogra ruling dynasty and the warriors of this region, the administrators of this region, thinkers of this region, writers, poets, all composite culture of this region, it was submerged. It was denied its identity. And now, एक बार फिर कोशिश कर देखते हैं. मैंने ट्रिब्यून के लिए वो लेख लिखा और उसमें 2 दिन के बाद ही जो है आपत्तियां आ गई क्योंकि हमारे कुछ स्टाफ के लोग हैं एडिटोरियल बोर्ड में बैठे हैं, वो एतराज कर रहे हैं कि एक महाराजा जो है एक दूसरे राजा का जो है वो कैसे कॉरोनेशन कर सकता है. अब मुझे लगा कि अब ये समय आ गया है कि जब मुझे इनको समझाना पड़े कि महाराजा और राजा में क्या अंतर होता है तो फिर बेकार है. बहरहाल मेरा लेख जो गया उनको मैंने जो संपादक थे उनको समझाने की कोशिश की, वो समझ गए और वो लेख गया. लेकिन इस प्रकार की मानसिकता अगर एक विशेष
उसको ही परिलक्षित करते हैं। ये बड़ा अच्छा अवसर है कि मुझे भी मौका मिला आज के विषय पर बोलने के लिए। अंडरस्टैंडिंग सहायता से वो किया था, लेकिन फतेह खान ने जो है वो धोखा दे दिया। उसकी सेना पहले पहुंच गई, वहां से पहुंचना जो है अफगानिस्तान से श्रीनगर तक आना ज्यादा आसान होता है, इधर से उधर जाना ज्यादा कठिन होता है। वहां से उतराई है, इधर से यह इन्वेजन भी असफल रहा क्योंकि उन्होंने सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। एक में दूसरे में जो है उन्होंने दीवान रामदयाल उनके नेतृत्व में सेना ली थी, दो अलग अलग रास्तों से। दूसरी वाली सेना जो है रामदयाल वाली, उसमें गुलाब सिंह थे। इस सेना को जो मदद मिलनी थी वो मिलनी थी रजौरी से, वो मदद नहीं मिली, उसे धोखा दिया और इनको जो रिट्रीट करना पड़ा, बहुत बुरी तरह से हारे। लेकिन गुलाब सिंह ने उस समय जो है उसको रोका, उसको दोबारा आयोजित किया और सेना का कम से कम नुकसान करते हुए जो है उनको वापस ले गया। अब जाहिर है ये बात जो है महाराजा रणजीत सिंह को भी किसी ने बताई हुई। जब पता चली तो उन्होंने उनको 2 जागीरें दी। मेरा प्रश्न है कि उनको 2 जागीरें क्यों दी अगर उनका कोई जो है उसमें कोई भूमिका नहीं की, कोई भूमिका रही होगी, उस भूमिका को महाराजा रणजीत सिंह ने पहचाना होगा और इसीलिए पुरस्कार स्वरूप जो है वो 2 जागीरें दी। बहरहाल 1819 में कश्मीर की विजय जो है महाराजा रणजीत सिंह ने। लेकिन इससे जुड़ी हुई बात जो है वह यह है कि जम्मू जो है वह 22 रियासतों का है और यहाँ की मशहूर कहावत है कि बाइयच जम्मू अगुआ। 22 रियासतों में जम्मू इज द लीडर। ये 22 रियासतें जो है जब से सिख मिसलें बनी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद से, तब से जम्मू का विभाजन हो चुका है, खंडन हो चुका है। सब अपना अपना जो है वो देख रहे हैं, इसलिए सभी कमजोर थे। ये जो 22 रियासतें हैं ये सभी आजाद रियासतें बन चुकी हैं। इन 22 में 6 ऐसी रियासतें थी जो चनाब और जेलम के बीच है। ये 6 रियासतें जो हैं ये मुसलमान शासकों की आती थी, बाकियों में हिंदू शासक थे। अब जब तक जो है महाराजा रणजीत सिंह कि जब तक इनको काबू में नहीं किया था तब तक जो है कश्मीर की विजय जो है वो संभव नहीं, क्योंकि हम जो है पुंछ को क्रॉस कर भी लेंगे। लाहौर से जाने का आसान रास्ता एक वो था, वहां से पार करके जिसको आजकल मुगल, लेकिन काबू नाम का ही पाया था। सच्चाई ये थी कि उसके साथ एक मियां डीडो नामक एक डोगरा वॉरियर जो है उसका उदय भी हुआ है। मियां डीडो और जम्मू के ये सारे रीजन जो है इन्होंने एक किस्म की जो है बगावत की हुई थी और गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। अब जम्मू के लोग भी, डोगरों की ये बात समझनी चाहिए कि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है जो सैनिक हैं, और आमने सामने की लड़ाई में किसी भी सूरत में ये पंजाब की किसी भी सेना का जो है आक्रमण जो है लंबे समय तक ये नहीं कर सकते। बहादुरी से लड़ सकते हैं, लेकिन जो इतिहास होता है कि बहादुरी में लड़ते रहे और आखिर में हारे, इतिहास वो बनता है। सफल इतिहास तब बनता है कि जब आप आक्रमण करें और इससे पहले कि कुछ और आगे बात बने आप वापस लौट जाओ। इसलिए जो है बहुत से लोगों को याद होगा उनके दादा परदादा जो है जिन घरों में रहते थे वो कच्चे मकान होते थे, उनकी छत जो है वह भी घास फूस की होती थी। उसका रीजन ये था कि गुरिल्ला वॉरफेयर होती थी, कोई आएगा जलाएगा, इतना बड़ा नुकसान कर देगा, 1 महीने में दोबारा वो उस घर को तैयार कर लेंगे। तो ये टैक्टिक्स थे जिससे सिख सेना जो है बहुत तंग थी। मियां डीडो ने जो है इतना बुरा हाल कर दिया था कि 1819 में कश्मीर पर कब्जा करने के बावजूद ये रूट जो है, जो डोगरा शासक जो है वो नियुक्त किया गया। वो प्रशासक नियुक्त हुए और साथ में एक कंडीशन लगाई कि ये मैंने एरिया तुमको दे दिए हैं सर, लेकिन शर्त ये है कि ये जो है
कम्युनिकेशन रूट जो है जम्मू, लाहौर और श्रीनगर के बीच से जो जम्मू से होके जाता है, इस पे किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण शर्त जिसे याद रखिएगा, आपके भी काम शर्त है वो कि आप अपने टेरिटरी का विस्तार नहीं कर सकते बिना लाहौर से पूछे। जो टेरिटरी आपको दी जाएगी, जो बात की जाएगी, आप उन्हीं सीमाओं के अंदर रहेंगे, उनसे बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने मान ली शर्त, मियां डीडो को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया, मियां डीडो की मृत्यु हो गई। अब महाराजा रणजीत सिंह को यकीन हो गया कि ये जो 22 रियासतें हैं जम्मू की, इन पे नियंत्रण ये आदमी ही कर सकता है। इस संदर्भ में महाराजा गुलाब सिंह का राज जो है अब्दुल में चियापोतो के स्थान पर वो हुआ। अब इस पृष्ठभूमि को याद रखना जो है बहुत जरूरी है जब हम उस काल का आकलन करने बैठते हैं कि ये किन परिस्थितियों में वह राजा बने। अब वो राजा बन गए कि तब तक मियां किशोर सिंह का देहांत हो चुका था, तो वो बड़े होने के नाते जो है उनको राजा बनाया, राजा वो बन गए। उसके बाद आप उनका इतिहास देखें, एक के बाद एक जो है, हर एक जो है, कोई ऐसी कैंपेन नहीं है महाराजा रणजीत सिंह का जिसमें उनकी भूमिका नहीं है। हर एक कैंपेन में महाराजा गुलाब सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई गई। उसके फलस्वरूप जो है उनको और भी इराद मिल गए। पेशावर की माइंस जो है, ये जो नमक की जो है, पहाड़ी नमक जिसको बोलते हैं, वो माइंस जो है वो सारी महाराजा गुलाब सिंह के पास थी। उनका व्यापार भी बल्कि इनके पास ही था। ये नौबत थी 1831 तक। मैं इसका विस्तार में नहीं जा रहा कि कौन सा एरिया कब कब कैसे कैसे जो है वो आया। 18 अब मैं आ रहा हूं कि जो है इनको देखा किस नजर से जाता है। 1831 से लेकर 1839 तक बहुत से विदेशी जो है वो भारत में आए और उन्होंने अपने अपने जो है वृत्तांत दिए हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझे और क्या है ये इलाका। इस संदर्भ में 1809 की जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, उसको याद रखना भी जो है वह जरूरी है। उस ट्रीटी के अंतर्गत जो है ये तय हो गया था कि रणजीत सिंह की सीमाएं कौन सी हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाएं कौन सी हैं। सतलुज जो है वह उसका सीमा निर्धारण हुआ। सतलुज के उस पार ईस्ट की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट की तरफ जो है महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र। यानी महाराजा रणजीत सिंह को एक चीज पता थी, उनके पास जो है सिंधिया के लोग भी गए और लोग भी गए ये कहने के लिए कि आओ हम मिलकर जो है अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तर था, हम खदेड़ सकते हैं, मैं अकेला ही खदेड़ सकता हूं उनको, लेकिन कहते हैं मुझे मालूम है ये फिर आएंगे, ये हमसे अधिक विकसित है, ये हमसे अधिक संगठित है, ये हमसे अधिक समृद्ध है, ये पहले से भी बड़ी सेना लेके आएंगे और फिर हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उसने जो है वो सदी की तब जाती है जब कोई दो बड़ी ताकतें जो है मिलती हैं और ये वो इस नतीजे को पहुंचती हैं कि जब तक हम समझौता ना करें तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम दोनों के आपसी हितों के ध्यान में रखते हुए यह समझौता हमें कर लेना चाहिए। तो 1809 की संधि अंग्रेजों के हित में थी, क्योंकि उस समय जो है उस स्थिति में नहीं थे वो अपना विस्तार कर सके। जब वो स्थिति में आए, जैसे सिंध की तरफ से आए, सिंध पर उन्होंने कब्जा किया और वैसे भी महाराजा रणजीत सिंह की मदद से ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है वो बीच ने मदद की और उस मदद की मुख्य धुरी जो है वो राजा गुलाब सिंह थे। राजा गुलाब सिंह की सेना जो है वही उनकी मदद करती थी और वो एक मायने में वो जो पर्वतीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, पश्तून इलाका है, पश्तून इलाका के समझो के सबसे बड़े मालिक जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर जो हैं वो राजा गुलाब सिंह थे। और ये पूरा जो है जो समा बना, जो माहौल बना, उसमें जो
बाहर से लोग आए, मैं सिर्फ दो लोगों का जिक्र करना चाहता हूं। एक गॉडफ्रे थॉमस विने और दूसरे सुबह प्रोफेसर श्याम नारायण लाल ने भी उनका जिक्र किया था, जैमू। दोनों ने अपने अपना जो है वो लेख लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, उन्होंने किताब लिखी है। विनय ने जो लिखा वो एक बड़ा उनका आकलन जब किया जाता तो ये कहा जाता है बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, इगोटिस्टिकल था, इतना इगोटिस्टिकल कि उसे यहाँ की कोई चीज पसंद नहीं थी, कोई आदमी पसंद नहीं था। राजा गुलाब सिंह के प्रति जो है तिरस्कार की भावना थी और उसकी सेवा में उधम सिंह को लगाया गया था और उधम सिंह को तो वो समझता था कि ये जो है बुद्धिहीन व्यक्ति है। हालांकि उस समय के जितने भी उधम सिंह के बारे में जो है महाराजा गुलाब सिंह के पुत्र जो थे, बड़े पुत्र, उनके बारे में सभी अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो अकेला आदमी है जिसने उनका जो है बड़े निरादर के साथ जो है वो उनका जिक्र किया हुआ है। उन्होंने लिखा कि ये जो है ये सारे सारे बेकार हैं, गंभीर लोग, घटिया लोग। लेकिन उसने राजा गुलाब सिंह के बारे में एक बात लिखी, कहते हैं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये पूरा एरिया जो मैं अब तक घूम के आया हूँ, ये वो जम्मू में पहुंच के हुए थे, जम्मू देख लिया था हमने, ये अकेला ऐसा एरिया है जहां पर जो है अजान की आवाजें सुनाई देती हैं। पंजाब में अजान बंद हो चुकी है। श्रीनगर में जो है 1819 में जब रणजीत सिंह का कब्जा हुआ तब से अजान जो है वहां बंद हो चुकी थी, लेकिन जम्मू जो है यहाँ पर अजान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। इस बात पर उसने आश्चर्य जरूर व्यक्त किया। अब दूसरा अकाउंट जो है वो जैमू का है। जैमू को लगा कि ये गुलाब सिंह जो है बड़ा ही टैलेंटेड आदमी है, प्रश्न पूछते थे, बेहिसाब प्रश्न पूछते थे, हर एक विषय के बारे में प्रश्न पूछते थे, आत्मा, परमात्मा, लोकोमोटिव, स्टीम इंजन, दीन दुनिया, यूरोप की आर्मी का संगठन कैसे होता है, गठन कैसे हुआ है, उनका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, बेहद क्यूरियोसिटी, बेहद बेशुमार प्रश्न। संभवतः यह खूबी उन्होंने महाराजा to everybody on the dais and off the dais. Let me take you back to the year 1822, and the month was June. I really don't know whether it was as such way as it is today. And the date was 17th month. On the fast flowing Vedic river Askini, now known as Chenab, Gulaab Singh, the most outstanding warrior of his time, was coronated as the Raja of Jammu by another great warrior and empire builder, the Singh Punjab Maharaja Ranjit Singh. And this seminar is basically to celebrate that occasion. As time progressed, this little recorded event in history turned out to be an event of great historical significance. The coronated Raja Gulaab Singh soon rose to the status of Maharaja and founded one of the largest princely estates known as the state of Jammu and Kashmir. It was, however, not just a small case of state formation or the giving of a princely estate. It was an event which was to have an extraordinary bearing on the course of Indian history and historical geography of our country. And also, it had important bearing on the political configuration that it is there at that point of time in Central Asia. It was not only geographically the second largest princely state, but it also became a symbol of resistance to colonial authority and important player in the politics of Central Asia. More importantly, under the leadership of its founder Maharaja Gulaab Singh, the ancient western boundary of Bharatvarsh, as depicted there in the Pauranic Caliphate literature, were retrieved after a long time, which was a rare feat. The founder of this state, Maharaja Gulaab Singh, is one of the eternally fascinating figures in the history of India. His life history is a brilliant saga of a continuous chain of bravery, courage, chivalrous deeds, and glorious exploits, which together
changed the course of local as well as the national history. His strength of will, the deep insight into human affairs, the persistence with which he held on to his objects, his intuitive understanding of the unfolding of the complex political situation, and his ability to hold his own in the political field against the trained diplomat of East India Company only goes on to show how he dominated the political power or political configuration at that point of time, and that as a historic personality, he not only dominated the stage of contemporary event, he also had few equal in his times. One of his lasting legacy has been the expansion of the boundary of the states up to Ladakh, Gilgit-Baltistan, and in the region of legendary Mansarovar. This great visionary and empire builder was born in a family of modest resources and therefore did not have those comfort and resources in his early life usually associated with royalty. The blood of Raghuvanshi clan, however, flowed in his veins through his paternal side. Thus, he had hereditary claim to valor and military distinction, which started manifesting themselves quite early, along with his gifted ability to transcend the apparent difficulty of his position, time, and space. At a very young age, Gulaab Singh chose to follow the tough and strict regimentation of the soldier life, and at the tender age of 16, he distinguished himself in the defense of Jammu against a force dispatched by Maharaja Singh in the Battle of Gulaab. This was just the beginning of the realization of a larger imperial dream that young Gulaab Singh seemed to have nurtured deep down in his heart. A heartful realist, he well understood the political landscape of his time and decided to test his fortune outside Jammu. This brought him to the famous Lahore Darbar. Since the story of his bravery, astute diplomatic skill, static understanding, and worldly wisdom had reached Lahore Darbar much before he reached Lahore Darbar, he had no difficulty in finding a place in Sikh army. Within a few years of his recruitment, he led many successful campaigns for his master and played a key role in the consolidation and management of the Sikh empire. Apart from the professional rise, he however also rose in the esteem of Maharaja Singh. He was no longer considered to be a mere brave and a skilled soldier. Now he also became a trusted aide and advisor of Maharaja Singh on matters of strategic importance and statecraft. Thus, within no time, Gulaab Singh rose from the position of an ordinary soldier to become the most valued and I quote, jewel in the crown of Lahore Darbar. His rise within the rank of Sikh army and the power and influence that he wielded in Lahore Darbar was so phenomenal that by 1831, Victor Jacquemin, the French naturalist and a traveler, described him as the greatest lord in Punjab, second only to Sikh Maharaja. He even went on to suggest that, and I quote, the Dogra chief better obeyed at distance than Ranjit Singh. Now Gulaab Singh was surrounded by all that spread luxury in the Lahore Darbar, yet he always nurtured an undiluted, deep sense of belonging, bonding, and shared memory with the region of his birth. Thus, once he was made the Raja of Jammu, he dedicated himself to the restoration of peace and order in Jammu, rather than moving to Lahore and basking in the sunshine of royal favor. However, the political configuration that followed the death of Ranjit Singh in June 1839 was not in his favor, and now he prepared himself to play a quite different role in the unfolding history of Punjab and Kashmir. We must remember that there also came a time when Maharaja Gulaab Singh was politically marginalized, he was deserted by friends, his entire family got decimated, yet Gulaab Singh was down but not out. He soon engaged himself once again in the political affairs of northwestern region. With his gifted ability to recognize the great military general and administration, he chose generals like General Jorawar Singh, General Baz Singh, and Mehta Bastiram, who conquered and consolidated Ladakh and Tibet as a part of his political domain. It all started in 1834, when Maharaja Gulaab Singh set his established General Jorawar Singh Kanuria with 4,000 infantrymen to conquer the territory between Jammu and Tibet border and
by 1841, this general was able to advance up to the Indus Valley into Tibet. They captured the province of Puri, advanced into Xinjiang, Bashar, and reached Takaiput. As Jorawar continues his advance, the British started getting extremely nervous. News that the Dogras were moving towards the frontier of Nepal made the company even not apprehensive but extremely nervous, and they feared a possible alliance with Nepal, the only powerful native state. I mean, there were hectic correspondence among the colonial authority at that point of time as to how to check Jorawar Singh advance. And the only thing they could have done, because still they were part of the Lahore Darbar, they started pressurizing the new king, Nihal Singh, to issue the order of the withdrawal of Jorawar Singh from Tibet areas. And finally, Nihal Singh was a young king. He had to succumb to the colonial pressure. We really do not know the order that he issued, whether reached Jorawar Singh or not. But we all know that after a point, Jorawar started retreating and he was killed during the period of retreat. But by the time he was dead, he had also left many of the areas within the political domain of Maharaja Gulaab Singh, which were unconquered, uncontrolled, or not controlled by any of the rulers of India so far. Possibly Lalita Datta was able to control part of it, but the extension of empire which was made under Jorawar Singh and Basti Ram was something very phenomenal, and we must remember that it was only Jorawar Singh who was able to extend the boundary of the empire to the area of Man Sarovar, which is so sacred and eternal to our memory. Now, we must also remember that the colonial authority by now had realized very well that there is no other option but to leave the entire territory under the control of Maharaja Gulaab Singh, because there was absolutely no power at that point of time and the colonial authority knew it very well, who could control that area, and therefore they started cultivating Maharaja Gulaab Singh. And one of the best examples would be, if we look at the correspondence that started between the colonial authority and Maharaja Gulaab Singh, that is a clear indication how they started now cultivating Maharaja Gulaab Singh. And they, in fact, they sent one of the complimentary Kharita, which is dated in 8 April 1842, and I am citing this just as an example to strengthen my point. And this Kharita was sent by the British government to Gulaab Singh. In Kharita, Maharaja Gulaab Singh was described by the colonial authority as the flower of the garden of this world, the most delicious fruit of the tree of hope. And a point one would like to make at this juncture for those who have been trying very hard to sell the narrative of Kashmir bought and sold. Much before the Treaty of Amritsar was signed, to control that huge area except Gulaab Singh. Thus the fact that Gulaab Singh would be the Maharaja of Jammu was a fait accompli. The treaty was a mere formality. Even if the treaty would not have been signed, even if Maharaja would not have decided to pay even a single penny, the colonial authority had no choice but to leave the area of JK under the authority of Maharaja Gulaab Singh. And therefore it is high time to declare this bought and sold narrative as the false narrative and grant it permanent leave from any discourse on the making of the state of Jammu and Kashmir. Now, the making of the state was not the end for Maharaja, rather it was the beginning of another end, which included the consolidation of the boundary of his state and devising mechanism to build the disparate territorial segment of his empire into one political entity. As a great visionary, he saw his state not as a group of separate cultural units, but as one political entity. His feat of pulling together several principalities, which often fiercely opposed each other, his further accomplishment in the territorial expansion of the state,
and his dealing with the contemporary power, including the colonial one, place him among as one of the greatest leaders of Indian history. Thus, seen in totality, can we really deny the fact that he broke ground in new direction and set an example that led to the grand results? Can one deny that he exercised a potent influence beyond his border, an influence which affected more or less all the power concerned with the western border? Can we afford to ignore his contribution to the process of building a historical consciousness, to the making of cultural symbiosis in the region, to the process of creating a semblance of political unity despite acute diversity in the state? Can we deny his role in the making of geographical boundary of our country that is so dear and sacrosanct, which exists in the historical memory of every citizen of our country? Unfortunately, in the existing historiography, such issues have rarely been addressed, and the genius and the large significance of his work have not yet been recognized, particularly in the context of national history and the history of the larger politics of Central Asia. While most of the historians working outside constructed history through the colonial record, little realizing the atrocious, canard and false propaganda launched by colonial authority to tarnish the image of this great ruler, the local historians have also not given him the treatment that he deserved. The local historians have kept themselves preoccupied with projecting him only as a great warrior. True, he was one of the greatest warriors in history. But is that just one? But that is just one layer of the multi-layered persona of Maharaja Gulaab Singh, and it is time that we engage ourselves in unraveling other layers of his personality, and also to do full justice to the individual ingenuity, determination, and enterprises that enable his rise to prominence and the larger implication of his deeds in the making of our nation. Revisiting and reconstructing the life and the legacy of Maharaja Gulaab Singh, therefore, is a necessity both for local and national historians. It is the fresh engagement and reconstructions involving issues such as these that offer hope for better understanding of his life and legacy, and his importance in the context not only of the history of Jammu and Kashmir, but also in the context of wider realm of Indian history. It has been shown again by historians the necessity to reconsider the construct of the past and the possibility to use the most intractable sources, piece them together, analyze them afresh with new set of questions to understand the larger context and the significance of the making of Jammu and Kashmir state and multifaceted personality of its founder Maharaja Gulaab Singh. And as we all believe, there can be no better platform to do this than the platform of a seminar where various sets of thinkings are accommodated and the exchange of ideas is encouraged beyond narrow ideological barrier. It is against this background that we intended to, we have organized this 3 days national seminar, and again, let me also say, express my sincere gratitude to the ICHR and the Case Study Center who decided to help us in organizing this seminar. We are thankful to them. And as Professor Suman said, the formal kind would come later, but let me also put this on record. So, and I hope that the various deliberations that would take place in the coming 3 days, we will have some fruitful discussion and we would go enriched in terms of knowledge than what we have today. So this is all about the seminar. Dignitaries at the desk, Professor Raghavendra Tawalji, Padma Shri and Chairman Indian Council of Historical Research, Sri Ashutosh Ji, who is the Director, Jammu Kashmir Study Center, Delhi. The Head of Department, Professor Suman Jamal Ji, Professor Shyam Narayan Lal Ji, Dr. Madhulika Singh and the coordinator, Dr. Mishra. I welcome on behalf of the university and on my own behalf all of you, sir. And also I welcome the delegates who have come from various states of the country. Also I welcome Padma Shri
प्रोफेसर के एन पंडिता जी, पद्मश्री श्री सिंह जी, the former Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh, Professor Kuldeep Chand Agarwal ji, the university officials, Professor Rajnikant ji, Professor Prakash ji, the faculty of the History Department, the faculty of the university, and my dear students. Before I take up this issue, let me share one incident that happened in the morning. So मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे पूछा कि आज तो हॉलिडे है, आप विश्वविद्यालय नहीं जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है एक कॉन्फ्रेंस में। पूछे किस पर कॉन्फ्रेंस है? तो मैंने कहा महाराजा गुलाब सिंह जी की लाइफ और लेगेसी को लेकर। तो उन्होंने कहा कि आपको हिस्ट्री कितनी आती है, और वो भी जम्मू कश्मीर रीजन पे। तो मैंने कहा कि चलिए इसी बहाने कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, द टाइटल ऑफ टुडे कॉन्फ्रेंस इज नॉट द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। द टाइटल इज रिविजिटिंग द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। एंड आई वुड नॉट like to go into the details because Professor Shyam Narayan ji has already spoken about in-depth journey of Maharaja Gulaab Singh ji. No doubt, he has already categorically elaborated the how a soldier could become the kingdom of Jammu, how he included by conquering the Kashmir, Baltistan, Riyasi, Kishtwar, and reached to Nepal, and also invaded the western border of the Tibetan. I think if you see the history in 18th century, of course, from scratch to become establish a kingdom, so we could see with the Hyder Ali and the Maharaja Sindhia. But in 19th century, I don't find anybody parallel to Maharaja Gulaab Singh, who from a soldier to establish the kingdom and extended the geography of that kingdom. And of course, General Zorawar Singh helped a lot in establishing that kingdom and extending the geography to the western border of the Tibetan. You won't find any other than the Gulaab Singh who had dared to invade the Tibetan. So the point is that the credit, whether has been given, due credit has been given to the Gulaab Singh for his Raj Tilak, for extending his geography to the Nepal, to the Tibetan. I think no. And this is the high time that we must come out with a resolution, and we must work hard to give a due credit to Maharaja Gulaab Singh for his achievements. The Jammu Kashmir region is so strategically important, and that also we have underestimated. What I request the above gathering that we must, coming out of that, dissolving the ideological boundary, and we must come out with a resolution on that. Second thing, forget about the giving credit for his achievements. We have undermined, and not only undermined, maligned the image of Maharaja Gulaab Singh by writing. The modern historians have written that he took प्रोफेसर रमेश राय जी, आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र कंवर जी ICSR के चेयरमैन हैं, इतिहास विभाग जिसके माध्यम से ऐसा आयोजन हो रहा है, उसके दोनों कर्णधार सुमन मैम और श्यामराजा जी,
महाराजा गुलाब सिंह को लेकर अभी पहले अपने वक्तव्य में प्रोफेसर श्याम जी ने और बाद में कुलपति जी ने जिस तरीके से बात की है, तो उससे निश्चित है कि इस पर आज फिर एक बार बात करने का समय आया है और 200 साल का राज्याभिषेक का अवसर हमें मौका देता है कि हम उस पर फिर से एक बार बात करें। भारत लंबे समय से शायद इतिहास की दृष्टि जहाँ तक नहीं पहुँचती वहाँ से आज तक एक निरंतर प्रवाह में जी रहा है। और इसलिए जब हम भारत की या भारत के किसी भी भाग की बात करते हैं तो वो दशकों या शताब्दियों में नहीं जाती, वो हजारों वर्षों में जाती है। एक निश्चित कालखंड, कुछ 100-200 वर्षों का कालखंड लेकर उसका विश्लेषण करना उसको अपने अतीत से काट देता है, और जब हम पिछली अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो भविष्य का सही दिग्दर्शन हम कर नहीं सकते। और इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पिछले दिनों तक बड़ा नारा चलता था, अभिनंदन है, कोई लगता है अब वो नारा लगाने की जरूरत नहीं बची है। जम्मू कश्मीर भारत है, आज से नहीं हजारों वर्षों से भारत है, और भारत होने के नाते हजारों वर्षों से इसकी एक ऐतिहासिक प्रवाह है और उसमें जम्मू कश्मीर निरंतर साथ रहा है। और इसलिए जब हम बात करते हैं तब की, तो अभी राजतरणी की भी चर्चा हुई, निर्मल पुराण की भी चर्चा हुई, उससे पीछे भी हम जाए तो महाभारत की तक भी जा सकते हैं। तो महाभारत में भी या उस कालखंड के अन्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के एक हिस्से के रूप में, एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमारे सामने आता है। और बार बार हम इन वर्णनों को पढ़ते हैं कि भारत की सीमाएं कहाँ तक थी। रायसूरी यज्ञ होता है, सारे भारत के लोग आते हैं, तो वहाँ ये वर्णन आता है कि इस हिमालय क्षेत्र के किन किन क्षेत्रों के लोग हमारे पास आए, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग, वहाँ के राजा, इन सब का वर्णन हमारे पास मौजूद है, लिखित में वर्णन मौजूद है। इसलिए जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से नहीं देखा जाता। भारत के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर की वो सीमाएं जो शायद महाभारत काल से थी, आज तक बदली नहीं। अगर हिंदू कुश में कृष्ण के समय में था, कालियावन की हम घटना पढ़ते हैं महाभारत में, तब भी अगर हिंदू कुश भारत में था, आज का भी जो हमारा मानचित्र है उसमें हम वहां पर था। और इसलिए पिछले कम से कम 5-7 हजार वर्षों से भारत की ये उत्तर पश्चिम सीमा अखंड है। इतिहास में कार्यक्रम में बहुत सारे समय ऐसा आता है जब बदलता बदलता है, कभी हम पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, बहुत बार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हमारी एक सांस्कृतिक मेमोरी जो है उसमें हिमालय का ये क्षेत्र, ये भारत हमेशा रहा है। और इसलिए जब भी हम जम्मू कश्मीर की या भारत की, दोनों में से किसी की बात करें, तो हिमालय का वो क्षेत्र जिसमें जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, बल्तिस्तान है, ये सब हमारी स्थिति में आता है, हमेशा रहेगा। ललितादित्य की चर्चा हुई, ललितादित्य ने इसको विस्तार किया, उन सीमाओं तक पहुंचाया। बाद में कुछ शताब्दियां ऐसी आई जब जम्मू कश्मीर का इतिहास और भारत का इतिहास भी आक्रांताओं का इतिहास रहा। उनके कालखंड में हमने कुछ मामलों में पीछे हटने का मौका आया, लेकिन हम रणनीतिक रूप से पीछे हटे होंगे, शायद लड़ाइयों में हारे होंगे, पीछे हटे होंगे, लेकिन उन सैकड़ों वर्षों की हमारी स्मृति में से ये हिस्से हमारे नहीं है, ऐसा कभी नहीं। और इसलिए जब जब हमारा अवसर आया, हमने आगे बढ़कर अपनी उन सीमाओं को वहां तक पहुंचाया। ये सारी बातें पुरानी हैं, महाराजा गुलाब सिंह से इसका कोई बहुत सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद ललितादित्य के बाद फिर एक समय आया जब महाराजा गुलाब सिंह को अवसर था और उन्होंने अपनी सीमाओं को फिर से वहां तक पहुंचाया जहां सांस्कृतिक रूप से भारत की सीमाएं थी। और इसलिए उन्होंने इन्वेड किया इस क्षेत्र को, ये कहना शायद ठीक नहीं है, उन्होंने रिक्लेम किया अपनी भारत की सीमाओं को जो हजारों साल से हमारी स्मृति में है। और सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम सब कितने थे, क्योंकि आगे मैं अभी देख रहा था, इतनी अधिक शायद किसी भी सेमिनार में 80 पेपर आना, ये एक बहुत सफल सेमिनार का लक्षण है। और उसमें शायद ही कोई विषय ऐसा हुआ हो जो छूटा हो, इसलिए मैं उसको दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें संकेत रूप में मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ कि ये इन्वेजन नहीं था, ये भारत की सीमाओं को
फिर से रिक्लेम करना था, जो महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत बड़ी सफलतापूर्वक किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषता केवल उनका अपना साहस और अपना रणनीति नहीं थी, ऐसे लोग चुन लेना, उनको अपना साथी बना लेना, अपना सेनापति बना लेना और उनको साथ लेकर चलना, ये अपने आप में एक स्टेट्समैनशिप की पहचान है। तो गुलाब सिंह जी ने ऐसे लोगों को अपने साथ चुना, जोड़ा, अपनी सेनाओं का नेतृत्व दिया, जिन्होंने इस पूरे महान उद्देश्य को साथ लेकर उनके सपने को या भारत के सपने को, मैं ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, भारत का सपना अपनी सीमाओं तक पहुंचने का, उसको गुलाब सिंह जी ने अपने सेनापतियों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया। इतिहास में बहुत मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सब जानते हैं 17वीं-18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी जम्मू कश्मीर फिर से एक सब कुछ खो देने के बाद खुद भी एक राजाओं के परिवार से ही थे, लेकिन एक सीमा ऐसी आई कि उन्होंने सब कुछ खो दिया और सब कुछ खोने के बाद एक शून्य में से अपने लिए एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेना, ये अपने आप में एक उदाहरण है कैसी चीज़ें वो होती थी, हुआ करती थी और कैसे अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने इसको करके दिखाया। अभी प्रोफेसर श्याम जी ने बहुत सुंदर ढंग से 1840 की चर्चा की, अमृतसर ट्रीटी की चर्चा की। अमृतसर ट्रीटी को लाहौर ट्रीटी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अकेले में अमृतसर ट्रीटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाहौर में की ट्रीटी में क्या छोड़ा गया और उसमें से क्या अमृतसर ट्रीटी में जोड़ा गया, इसको जब हम एक साथ रखकर पढ़ते हैं तो ये चित्र पूरा स्पष्ट हो जाता है। जैसा उन्होंने कहा वो संधि थी, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक केवल औपचारिकता थी, सच में औपचारिकता थी, नहीं होती तो क्या कश्मीर जम्मू में नहीं होता, अगर वो पैसे नहीं देते तो भी जम्मू में नहीं होता क्या। और जो था, मैं उनकी बात को दोहराना नहीं रहा हूँ, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो ये सब होने के बावजूद अगर केवल संधि ही सब कुछ था तो उस डॉक्यूमेंट के बाद जब वो कश्मीर पहुंचे क्लेम करने के लिए तो क्या कश्मीर उनको मिल गया था? मैं ऑर्डर लेके आया हूँ अंग्रेजों का और संधि करके आया हूँ और अब खाली कर दो, उन्होंने खाली कर दिया था क्या? श्रीनगर और कश्मीर की उस ज्योग्राफी को भी ध्यान रखना चाहिए जो उन्हें मिला, जहां गए, जहां उन्होंने क्लेम किया वो युद्ध करके उन्हें लेना पड़ा। और वो जो कश्मीर युद्ध करके लिया वो आज का कश्मीर नहीं था जो के पंजाब से लेकर और पूरी तक का है, वो केवल हारी पर्वत और मैसूमा का मैदान, ये जम्मू, ये कश्मीर उनको मिला था और जो युद्ध करके लेना पड़ा। तो युद्ध करके जीत कर लिया तो उस कागज की कीमत क्या बची? उन्होंने युद्ध करके हासिल किया और युद्ध करके हासिल किया तो केवल वो हिस्सा हासिल किया और उसके आगे तो ऐसा नहीं था सब कुछ 1840 में होगा। 1840 में के बाद कंसोलिडेशन के बाद उन्होंने मुजफ्फराबाद, आजकल बड़ी चर्चा पीओजे के में है, 1854 में मुजफ्फराबाद उनके पास आया, युद्ध करके जीता है। तो 1840 में तो नहीं मिला था, मुजफ्फराबाद बगल का है, हम सब जानते हैं, बारामूला पार करिए मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। 1854 में मुजफ्फराबाद उनके पास आया। समझना चाहिए ये एक दिन की प्रक्रिया या उस समझौते की, उस कागज की कार्रवाई की प्रक्रिया 1840 में जो हो गई जिससे कश्मीर के महाराजा बन गए, ऐसा नहीं था। ये दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य को इनकॉर्पोरेट किया, कंसोलिडेट किया और आज हमारे पास जो है वो इसके कारण। महाराजा गुलाब सिंह पर जब हम आज चर्चा कर रहे हैं तो उसका नेतार्थ यही है कि आज जिस भारत के मानचित्र को हम मना रहे हैं, आज जिसकी हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव में जिस मानचित्र को हम प्रयोग कर रहे हैं वो केवल इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र केवल इसलिए है कि महाराजा गुलाब सिंह ने इस सीमाओं को रिक्लेम किया था और उसको भारत के साथ जोड़ दिया। जो उन्होंने जोड़ा वो 1947 में भारत में शामिल हुआ और इसलिए आज के भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये महाराजा गुलाब सिंह से इसकी कहानी प्रारंभ होती है और इसलिए उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। और शायद हम अगर केवल कल्पना में सोचेंगे ये नहीं हुआ होता तो भारत की सीमा कहाँ होती, मुझे लगता नहीं कि आपको डराने की जरूरत है, लेकिन हमें मन में विचार करना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर उस समय भारत में शामिल नहीं हुआ था और इस प्रकार से महाराजा गुलाब सिंह ने कंसोलिडेट नहीं किया होता तो आज भारत की सीमा शायद वहाँ नहीं होती जहाँ है और शायद भारत का आकार उससे बहुत छोटा होता। और इसलिए
महाराजा गुलाब सिंह पर जब हम बात कर रहे हैं तो इस जब रिविजिटिंग लीगेसी की बात कर रहे हैं तो तब से लेकर जब उन्होंने राज्य स्थापित किया तब से लेकर आज की लीगेसी उन्होंने और उनके आने वाली पीढ़ी ने जिस तरीके से भारत को समझा, भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा, भारत की सांस्कृतिक कलेवर को जम्मू कश्मीर में जो बहुत कुछ नुकसान हो गया था उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, मुझे लगता है उसका भी अध्ययन होने की जरूरत है। कैसे सब कुछ सारे टूटे हुए मंदिर फिर से एक दोबारा खड़े हुए, जम्मू के अंदर तो विशेष रूप से खड़े हुए, कश्मीर में भी खड़े हुए, बाकी जगहों पर भी खड़े हुए। कैसे ट्रेड को फिर से एक नया आयाम मिला क्योंकि सुरक्षा मिली तो ट्रेड बढ़ा, मुझे लगता है उसका भी एक पेपर है इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। कैसे पूरा अंग्रेजों के दबावों को सहते हुए भी हमारे बीच में मैं भयभीत इसलिए हूँ कि हमारे बीच में जब समयाल जी हैं, हमारे बीच में कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं, पंडिता जी जिन्होंने बहुत बहुत काम किया है इस पर और उनका सबका उद्बोधन होने वाला है, इसलिए उनसे ही हम ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन इस समय से कैसे उन्होंने और उनके आने वाले पीढ़ियों ने भारत को स्थापित करने में मदद की, कैसे उसको आगे बढ़ाया। कश्मीर टैक्स सीरीज, यहाँ जिन लोगों ने भारत जम्मू कश्मीर की फिलोसफी पर, जम्मू कश्मीर की कल्चर पर, जम्मू कश्मीर के लिटरेचर पर काम किया है, कश्मीर टैक्स सीरीज जब शुरुआत में भारत में पहली प्रेस लगनी शुरू हुई तो जम्मू में प्रेस लगाई गई और उसके क्रिटिकल एडिशंस निकाले गए। 115 ग्रंथ जो लगभग उस समय नष्टप्राय हो गए थे, उनको एकत्र करके एक पूरा एडिटोरियल बोर्ड बनाकर उनको वर्षों की मेहनत के बाद 115 भारतीय संस्कृति के ग्रंथ से निकालकर शैव दर्शन के बाकी के बौद्ध इन सबको लाकर उनका प्रकाशन करके फिर से उनको रिवाइव करके देश भर तक पहुंचाने का काम ये इस जम्मू से हुआ है। और ये सारी प्रक्रिया अगले 100 वर्षों में हुई है। भारत में जो जम्मू कश्मीर मिला, जिसमें गिलगित भी है, जिसमें बल्तिस्तान भी है, इसकरू भी है और बाकी सारे हिस्से जिनकी हम केवल आज चर्चा करते हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, तिब्बत के वो हिस्से, तिब्बत से लगते हुए वो हिस्से जो भारत के साथ थे, ये सारे आज हमारे साथ हैं। कुछ हमारे व्यवहारिक रूप से हमारे नियंत्रण में है, कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो भी हमारे मानचित्र में। कैलाश मानसरोवर की उन्होंने चर्चा की 1684 में मुगलों ने जो संधि की, इसमें कैलाश मानसरोवर उन्होंने छोड़ दिया था। 1842 में जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, 1842 की चिशुल ट्रीटी में वापस कैलाश मानसरोवर भारत में होगा, ये 1842 की ट्रीटी में मेंशन हुआ है, लिखित हुआ है। चीन और तिब्बत के दोनों के सेनापतियों ने ये लिखकर दिया कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा होगा और वहाँ पर जो मानसर गांव है उसका रेवेन्यू जम्मू आएगा। और केवल कागज नहीं, वो कागज नहीं है क्योंकि वो लागू हुआ है। 1842 से लेकर 1962 तक, 120 साल तक चीन ने भी अपने उस संधि का आदर किया है और 1969 तक, स्वतंत्रता के 12 साल बाद तक भी उस मानसर गांव का मानसरोवर का रेवेन्यू भारत आया है। उसके बाद हमारे ऑफिसर ने जाना बंद कर दिया, इसलिए आज हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तक हमारा रेवेन्यू आता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे सांस्कृतिक विकास, हमारे साहित्यिक विकास, हमारे राजनीतिक मानचित्र, हमारे एकात्मता के सारे सूत्र जो इस 1846 से लेकर 1900 लगभग 100 साल से थोड़ा अधिक तक चला है, उस पूरी लीगेसी को रिविजिट करना, उसमें से सारे संबंधों को ध्यान में लाते हुए रिमार्क्स मेड बाय श्यामला जी ने जो कहा कि ये संधि नहीं थी, बिल्कुल सही है, ये तो वैसे होना ही था, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर। अंग्रेज एक कॉलोनियल शक्ति थी, वो जो भी करते थे एक बॉर्डर पॉलिसी का उसका एक पार्ट होता था, वो ऐसे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे और डीप थॉट पॉलिसीज होती थी। पर ये डीप थॉट होने के बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं तो वैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ कि बहुत से उस जमाने के अफसरों ने, कंटेम्प्रेरी ऑफिसर्स ने इसका विरोध किया है। यंग हस्टन ने किया है, थॉट ने किया है कि ये बहुत बड़ी भूल हो गई है और ये करना नहीं चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स पर लंबी चर्चा हुई इस पर, क्या कर दिया आपने। और ये भी जानना जरूरी है इस सदन के लिए कि अंग्रेज ने कश्मीर को कभी छोड़ा नहीं। जब भी मैं कश्मीर कहूँ तो मान के जम्मू कश्मीर का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। द ब्रिटिश डिड नॉट लीव जम्मू कश्मीर फॉर अ डे, दे दिया सब कुछ,
1885 में एक रेजिडेंट बन जाता है। रेजिडेंट बनने के बाद उसकी डे टू डे डायरीज देखिए आप, वर्चुअली दे हैव इंटरफेयर्ड इन एवरी वे ऑफ लाइफ। कश्मीर वाज टू इम्पोर्टेंट। शाम को जब मैं आपसे बात करूंगा आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाऊंगा इसकी कि व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई द वर्ल्ड वाज सो इंटरेस्टेड। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू सम ऑफ दोस थिंग्स। वाइस चांसलर साहब, आप हिस्टोरियन, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं पर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं। आपने जो रिमार्क्स ब्रीफली कहे, they were very interesting and very fascinating for a student of history. आशुतोष जी से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। हम लोग हफ्ते में 2-4 बार बात करते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और उन्होंने जो चर्चा की आपके सामने, see he made a very important point, which I of course I'll read at length in the evening lecture, कि 200-400 साल के इतिहास से आप एक देश के, एक जनता के, एक समाज का इतिहास बदल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी भूल है कि भारत के इतिहास को सेंचुरीज में नापना। श्री अरविंदो तो कहा करते थे कि ये इतिहास सेंचुरीज में नहीं, मिलेनियम्स में नपता है। वी डू नॉट गो बाय सेंचुरीज। हमारे जीवन में, आप और हमारे जीवन में 10-20 साल तो हम ऐसे ही एक पल में बिता लेते हैं। तो भारत के इतिहास को, इस देश के आप सेंचुरीज में जिस दिन सोचना छोड़ जाएंगे, आपको ये सारा चित्र समझ आएगा। मैं इसी उद्देश्य से हम लोग, आशुतोष जी ने एक बहुत और फैसिनेटिंग बात कही, मानसरोवर, मुझे नहीं पता था कि मानसरोवर का जो रेवेन्यू है, आई डोंट नो, दिस इज टोटल, इट इज अ ब्लास्ट ऑफ नॉलेज ऑफ दिस। ऑफ कोर्स यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। हिमालय जिसे अनेक लोगों ने, हमारे सेजेस ने थ्रू द सेंचुरीज, आप देखिएगा। अगर आपको इस फील्ड में रुचि है, आप श्री अरविंदो को पढ़िए। He describes this country south of the Himalayas and the south. He says ये सब एक है। Politically हम लोग एक नहीं भी हुए होंगे, no doubt. But anything in the Himalayas and south of the Himalayas, right down to the oceans, has been one for millions and millions. Generation, ages to ages, हजारों साल की बात हम कर रहे हैं। भारत में एक विडंबना है, हम हर चीज को हजारों साल में नापते हैं, क्योंकि देश ही इतना पुराना है। 2-3 बहुत महान म्यूजियम बनने जा रहे हैं। एक 10,000 ईयर्स ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, चल रही है चर्चा, क्योंकि इस देश की कल्पना 10,000 साल में होती है। आप जहां बैठे हैं, इस जगह की कल्पना 2-3 हजार साल में तो निश्चित होती है। अग्निहोत्री जी मेरे ख्याल से सहमत होंगे इस बात से। ICHR एक कल्पना कर रहा है। सुबह ही मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, तो मेरी प्रोफेसर श्यामला जी से और सुमन जी से और विशा जी बैठे हैं बनारस से यहाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। मेरा इस सम्मेलन में आने का मूल कारण ये था कि कुछ आप जैसे स्कॉलर्स को मिलूं यहाँ, क्योंकि हम लोग जो योजना उठा रहे हैं ICHR में, कुलपति जी भी थोड़ी देर बाद आ गए, आशुतोष जी तो बैठे ही थे, तो मैंने उसी चर्चा को एक मीटिंग का रूप देकर, हमने निर्णय तो हम लोग कर चुके थे ICHR में कि हम कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के इतिहास को 2000 साल की विजुअल्स में क्रिएट कर रहे हैं। एक एग्जीबिशन बनाएंगे। उस एग्जीबिशन को हम देश भर, किसी सवाल देश का नहीं है, सवाल दुनिया का है। दुनिया समझ ही नहीं पाई कि कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें अपनी एम्बेसी से इतनी लेटर्स आती हैं, तो इसका हमने उत्तर ढूंढा कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में, विजुअल्स को, हम टेक्स्ट को विजुअल्स में कन्वर्ट करके हम 2000 साल के कश्मीर को हम सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाएं और दुनिया भर में पहुंचाएं। ICHR इस काम के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे सामने बहुत बड़े विद्वान पंडिता जी बैठे हैं, निर्मोही जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी, इनसे बड़ा विद्वान आज आपके फील्ड में नहीं है इस देश में। सौभाग्य से सब मेरे संपर्क में। निर्मोही जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने मिला जरूर था पद्मश्री वाले फंक्शन में, दर्शन हुए थे आपके। तो ये एक सोच है कि हमने इस नैरेटिव को कैसे बदलना है। और ये जो गुलाब सिंह वाला, इसी, लेट मी टेल यू समथिंग एल्स। ICHR ने निर्णय लिया है, मैंने हाल ही में कुछ ही महीने पहले मैंने कार्यभार संभाला है ICHR का, और हमारे प्रारंभिक कार्यों में यह है कि हमारा थ्रस्ट एरिया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है।
जो यंग स्कॉलर मुझे कल एयरपोर्ट से पिकअप करने आए, जिसकी ड्यूटी लगाई गई, मैं तो इन चक्रों में फॉर्मेलिटीज में पढ़ा नहीं करता, फिर भी डिपार्टमेंट ने गाड़ी भेज दी, व्यक्ति भेज दिया। उसका लाभ ये हुआ कि आधा घंटा हम मेरी खुल कर बात की। और अनिल उस स्कॉलर का नाम है, उसने कहा मैं ये काम में कर, तुम तो हमारे मतलब क्यों, हम तो कश्मीर को, एंशिएंट कश्मीर के मैं तो स्कॉलर्स की खोज में हूं कि कौन इस फील्ड में काम कर सकता है। So this department, this university is the right forum, and I am announcing it here. शीघ्र मैं वापस दिल्ली जाते ही एक दो दिन में हम लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपके डिपार्टमेंट को, वैशाली साहब, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने डिपार्टमेंट को ऐसी चार्ट के साथ जोड़िए। हम ये काम आपका है, क्रेडिट आपका, हम तो पीछे रहेंगे पर्दे पर ये वी वुड लाइक यू टू हेल्प अस क्रिएट दिस ह्यूजली इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर in simple words and visuals. You see, विडंबना क्या होती है, कोई भी हिस्ट्री का स्टूडेंट जानता है कि टेक्स्ट है हमारे पास, ये चित्र हम देखते हैं। मैं भी कुछ एक महाराणा प्रताप, एक सभा है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई कुछ रोज पहले, तो मैं वहां समझा, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भरा बैठा, तो मैं समझा रहा था, चित्र आप देखते हैं, ये चित्र महाराणा प्रताप का ओरिजिनल चित्र कुछ नहीं है, किसी ने नहीं देखा, पर टेक्स्ट है। बड़ी मूछें थी, चौड़ा माथा था, ये कपड़ा बांधते थे, ये थे, वो थे, ये टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होती है इमेजेस की। तो ये पॉसिबल है, ये दुनिया का एक परंपरा है, कर सकते हैं। कश्मीर की विडंबना क्या है कि हमारे पास कुछ भी, सी आई वॉज गोइंग थ्रू अ बुक, यू नो, स्टेन के सब लोग जानते हैं, राजतरंगिणी के पहले ट्रांसलेटर, बाद में पंडित जी ने किया, पंडित ने किया, देयर इज अ रेफरेंस इन दैट बुक। महाराजा प्रताप, हमारे जो पाश्चात्य स्कॉलर्स हैं, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वो राजतरंगिणी को हिस्टोरिकल सोर्स मानते नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दिस। आशिफ मुजुमदार सेज that the Martyr temple was excavated on the indications provided in the Rajtangiri as translated by Stein. So many other temples, but we do not have the description. Rajtangiri describe तो करती है कि ये टेम्पल था, वैसे सुंदर था, ये वहां, you see, we have to visualize. So the idea is broadly, I don't know how we are going to do this, but obviously we have scholars who can do this. The other thing, as a student of history, I've been teaching for a good 40 years, and I've been in the system of history for, I don't know, maybe 50, I'm now almost 70 years. To young scholars, there is one submission. History of Kashmir में एक दिक्कत है कि कुछ तो सोर्सेस की कमी है, कुछ आर्काइवल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने जब अपनी लास्ट किताब बी क्लियर इन कश्मीर, बिल्कुल, I worked a lot in Kashmir, Srinagar, and of course my period was limited for the 3 or 4 years of 47 to 50. बट मैं जब श्रीनगर आके गया, मैं माथा पकड़ के बैठ गया कि हाँ, तो देखिए इतना दुर्लभ सामान रखा है, इतना मुश्किल सामान यहाँ रखा है, पर देखिए इट इज जस्ट लाइंग स्कैटर्ड। आपकी जम्मू आर्काइव, स्टेट आर्काइव्स, उसको 60 साल पहले कंडेम कर दिया गया था कि ये बिल्डिंग के अंदर कुछ रखने के सेफ्टी नहीं, बिल्डिंग आज भी उसी में। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, ऐसे फोरम्स का एक अपील होनी चाहिए। इस रीजन की विरासत को अगर आपने संभाल के रखना है, सबसे पहले आर्काइव्स को संभालिएगा। आर्काइव्स आपका सोर्स है। व्हाई इज एन आर्काइव अ सोर्स? इसी जम्मू में ही एक स्कॉलर रहते थे, बलराजपुरी की, मुझे पता था, वो सब लोग जानते, उनके नाम से फेमिलियर हैं। See, ideologically we may or may not agree, but he was a dedicated scholar, a very good political scientist. वो एक मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था कश्मीर अफेयर्स। मुझे पता चला कि वो बहुत बीमार हैं। मैं जब अपने रिसर्च 5-8 साल पहले काम कर रहा था तो जम्मू आया, मैं उनके निवास पर गया। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत उनकी बिटिया थी, वो मेरे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आई एम मिसिंग द नेम, सम नेम। मुझे वो एक छोटा सा एक मैगजीन मिल गया कश्मीर अफेयर्स का, 1960-61 का शायद। बहुत मैं आपको ये क्यों साइड कर रहा हूँ कि यंग स्कॉलर्स के लिए, जो रिसर्चर्स हैं, जो यंग टीचर्स हैं, कि छोटे छोटे दुर्लभ मैगजीन्स को उठा के, छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर आप क्या से क्या कहानी बना सकते हैं। डू नॉट गो इनटू, इसी विडंबना क्या है कि ज़्यादातर हम लोग ये 4 किताबें इधर से उठाई, 4 वहाँ से उठाई, कट पेस्ट करके, और 4 बेसिकली वी आर सेइंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड। तो मेरी आपसे निवेदन यही है कि गो इनटू, बिकॉज कश्मीर की हिस्ट्री अभी लिखी जानी है। मेरा तो अटूट विश्वास है। मैं गिलोत्री जी से हम लोग कुछ रोज पहले दिल्ली में बैठे थे, मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था
कि कहाँ है वो सोर्सेज। मैं तो देखिए एक कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हूँ, आशुतोष जी से भी मैं कहता हूँ, मेरा तो विश्वास है कि वो अभी भी कॉन्फिडेंशियल नोटिंग्स, अभी भी वो लेटर्स कहीं ना कहीं है, महाराजा साहब के पास हो, उनके निवास के पास हो, कहीं तो वो हैं, लंदन में हो किसी अंग्रेज अफसर के पास, ये नोटिंग एग्जिस्ट करती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, यू नो, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। मैंने जिस बात का आपको जिक्र किया, दिस इज फ्रॉम द कश्मीर, यू नो, द व्हाट आई वाज सेइंग, कि जो कश्मीर अफेयर्स में मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं इसमें से। स्टोरी ऑफ अमरनाथ यात्रा, उसी अमरनाथ यात्रा आपकी आने वाली है कुछ रोज में। मैं अमरनाथ यात्रा की बात कर रहा हूं 1961 में 11,000 लोगों को देश भर से चयन किया गया अमरनाथ यात्रा करें। अमरनाथ यात्रा करने के बाद उन्होंने कश्मीर अफेयर्स में एक लेख लिखा। उस लेख के मैं कुछ आपको लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपको इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का अनुमान लग जाएगा कि क्यों जरूरी है हमें कश्मीर को जानना। Pahalgam, this is what he writes. Pahalgam is in the heart of what is known as Shiva Bhumi. Most of the surrounding places, lakes, meadows, mountains, peaks are named after the Lord. In a neighboring village, a spring washes the stone image of Bhrigu Rishi, one of the founders of Indian astrology. 4 miles from Srinagar is Pandristan, the old I may be getting the pronunciation wrong, old capital of Kashmir, founded by Ashok. About 2 miles ahead stands an imposing statue of Lord Ganesh. About 9 miles from Srinagar is a statue of goddess Jwala. Little further is the city of Avantipur. A few miles along is Bij Bihara, called the Kashi of Kashmir. On the right bank of the river Tasta is a plateau named after Lord Vishnu. Anantnag draws its name from the Lord Ananta. A few miles from Pahalgam is a temple dedicated to the sun goddess that was built in the 8th century. See, what do you get from this? This gentleman could not have known in 1961 where we are heading. He was a simple traveler like you and me. आप कश्मीर की राइटिंग्स में, कश्मीर एक बहुत सुंदर, जम्मू कश्मीर एक बहुत सुंदर इलाका रहा है शुरू से। सदियों से यहाँ लोग आए, घूमने आते थे, और we have the first references from 14th 15th century of travelers. Travelers के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस रीजन को समझने के लिए। वो डिस्क्राइब करते हैं। अब गेजेटर देख लीजिए 1902 का, लॉरेंस का। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो नैरेटिव है, false narrative that a region changes. See, लॉरेंस तो ये कहता है कि यहाँ का मुसलमान तो हिंदू से भी ज्यादा हिंदू है। 1902 कोई ज्यादा समय थोड़ी ना हो गया। गांधी जी तो कहते थे कि मुझे तो हिंदू कश्मीरी और मुसलमान कश्मीरी में अंतर ही पता नहीं चलता। Everyone has been saying this. So the kind of things you see, this is the first seminar. The ICHR this is the first seminar. जैसे मैंने कहा, हमारा ये थ्रस्ट एरिया बनने जा रहा है। As chairman of the ICHR, I would like to announce from this platform, any good project that is submitted by students and researchers from this state will be welcomed at the ICHR. आप ओरिजिनल रिसर्च लेके आइए, जेन्युइन ओरिजिनल सोर्सेज पर लेके आइए। हमारा थ्रस्ट एरिया बनेगा कश्मीर, जैसे ICSSR का बना था कुछ समय पहले। कई प्रोजेक्ट्स मैंने एग्जामिन करे हैं ICSSR में। मेरे भाई थे यहाँ शैलेंद्र जी, उनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, सबमिट होते ही गुजर गई, सबमिट हुआ नहीं होती थी। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। यू नो, आई वाज जस्ट नरेटिंग इन द मॉर्निंग, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, राजतरंगिनी में एक जिक्र आता है कि बादशाह के प्रति अगर किसी ने रोष दिखाना होता था तो वो भूख हड़ताल करता था। तो लुक एट द कॉन्सेप्ट, यू नो, भूख हड़ताल तो आज भी करते हैं। आशिफ मुजुमदार लिखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो राजतरंगिनी वाला, he says we find it all over India. तो यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल, यू नो हाउ डीपली। मैं तो अक्सर अपने लेक्चर जब भी कश्मीर पर बोलता हूँ या लिखता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ कहीं, I try to visualize, you know, I always appeal to my students, take your mind back.
Go back to 1000 years or 1500 years. Imagine कि पतले से दुर्बल शंकराचार्य टूटी फूटी लाठी लेकर और नंगे पांव घूम रहे हैं और पहुंच जाते हैं श्रीनगर। और श्रीनगर जाकर आशुतोष जी ने तो बहुत काम किया उन पर, मुझे बता रहे थे सुबह इतने महीने रहे वहां, कल्पनाएं की वहां, सोचा, विजुअलाइज। जब मैं कश्मीर पर काम कर रहा था किताब के लिए, अनेकों बार कश्मीर श्रीनगर जाना हुआ, मैं एक पॉइंट, आई मेक इट अ पॉइंट, यू नो, व्हेनेवर आई गो देयर, I stand there and I visualize. I let my, as a student of history, you should also do that as students of history. Visualize, look down towards the valley. You know, you stand there and visualize क्या वहाँ उस ज़माने में 1000 साल पहले क्या सीन हुआ होगा। एक संत आता है, कहाँ से चलते चलते बाबा आता है और बैठ जाता है वहाँ। I stay normally when I go to Singapore. I stay at the Taj. Taj is a very, it overlooks the valley, you know. So I get up very early. तो बाहर के, तो I was standing one day. बाई से, you know, आरती की आवाज अभी आना शुरू हुई है, सुबह शंकराचार्य आरती शुरू हुई, उधर से पहले अज़ान की आवाज आ रही है। It's a fascinating mixture of the two melodies mixing in your mind, you know. So this is, I mean, I will go off track if I develop on this, but the point that I'm trying to make is that ICHR is sponsoring this exhibition, this conference. We are going to sponsor a conference Leh में, that's it, भाई साहब, Leh में, और उसके बाद हम श्रीनगर में कर रहे हैं। आशुतोष जी is our guiding factor. We are finding the request the University of Singapore, of course Jammu Kashmir. हम लोग 3-4 conferences कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी, I would welcome proposals from small colleges, small district towns. You know, we will be very happy to come. So, thank you, Saruji. A very good afternoon to all of you. It is my privilege to propose a formal vote of thanks on this occasion. On behalf of the Department of History, I would like to convey my deep regards and hearty thanks to Honorable Vice Chancellor, University of Jammu, Professor Umesh Raji, who constantly guided and supported to shape this conference. Once again, we are thankful to our Honorable Vice Chancellor for gracing this occasion. I would also like to extend our special thanks to Professor Raghavendra Tamar, Chairman Indian Council of Historical Research, who consented to preside over the function despite his busy schedule and inspired us by his presidential remarks. Once again, our sincere thanks to Professor Raghavendra Tamarji, Chairman ICHR, for generous financial support for this occasion. I would also like to extend our gratitude to Sri Ashutosh Bhatnagarji, Director JK Study Center, for his thought-provoking, insightful keynote address. I would also like to thank the team of JK Study Center for the support at various stages. Thanks are also due to Bhatnagar Brigadier G.S. Rajput, Member Secretary Maharaja Gulaab Singh Memorial Trust, for his cooperation and support. I would also like to take this opportunity to extend my sincere thanks to all the honorable delegates who have come here from long distances for gracing this occasion, like Padma Shri Professor Singh Mohiji, Padma Shri Kashinath Panditaji, former Director, Center for Central Asian Studies, University of Kashmir, Professor Kuldeep Chandra Gunawatri, former Vice Chancellor, Central University, Madhya Pradesh, Professor Keshav Mishra ji, Department of History, BHU, Sri Harbans Singh ji, Professor Ajay Ghosh ji, and all the other guest invites. I would also like to thank Professor Rajnikant ji and Professor Anthal ji for gracing this occasion. Further, my deep sense of appreciation for all the students, scholars, volunteers, and committee members of the Department of History for their enormous cooperation in making this seminar a great success. Last but not the least, I would like to thank print and